Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Request Dr. Mansukh Mandiaji, Dr. Vijay sir, to please light the lamp. To equip and empower our students in their journey towards creating an environment which is conducive to innovation and a perpetual quest for excellence. All its efforts are aligned with changing the face of our nation. A 72-acre campus designed to offer global standard infrastructure is the reason why that he holds such an important and fundamentally one of the most important sectors in a nation. I think one of the most inspiring things that have happened in the last 8 years, and for me as an educator and as a primary stakeholder in the field of healthcare, is the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji to provide universal healthcare to all the citizens of our country. I think this is something that is truly visionary, and it's something that resonates with all those who have great pride and passion for our country, because this is something that is extremely important for our nation. I remember when I was putting up this hospital, this was also one of the thoughts which my father had inculcated to me very early on, where he said that opportunities of education and healthcare should be available to each and every citizen of this country, right from Kashmir to Kanyakumari. So I think the vision of the Honorable Prime Minister to provide universal healthcare to all the citizens of our country, and which is now so ably being taken forward by the Health Ministry under Sri Mandiaji's leadership, is something truly extraordinary. I would like to say here that this vision demands great investment in physical infrastructure, it demands great investments in human resources, and I would like to say here modestly to the Honorable Minister that the DYPatil Group, in the last 4 decades of its service in the field of medical education and healthcare, has provided almost 6,000 hospital beds to the healthcare infrastructure of the state of Maharashtra. And another thing which I would like to mention over here on this occasion is that normally when we talk about hospitals, we know that there is an economic divide. There's a divide between those who can access higher quality hospitals and those who cannot afford to come into hospitals. I would like to say here that this hospital, the DYPatil Hospital in Navi, Mumbai, as well as our other sister hospitals, that we cater to those patients who come from a socially backward and economically backward background. Most of the hospital patients that are treated in our hospital, Mandiaji, come through the Ayushman Bharat scheme, the Mahatma Jyotiba Philay Yojana, and all the various government schemes there. Because I remember when we were establishing this hospital, my father had given me just 2 pieces of advice. He said that medical education is expensive. That's something that fundamentally there's very little that we can do about it. But what you can certainly do is through the services of the hospital, you can reach out to the masses. So when we were constructing this hospital, he advised me to visit the SouthAsia hospital in Puttaparthi and in Whitefield. And I went over there and I saw how that hospital operates. And that's the vision that we've taken back over here, and we've tried to implement this in reality. Once again, I really feel honored that Honorable Minister is present over here.
there are so many things that I would want to talk about, but I think we're all waiting for him to hear what he has to say about the field of healthcare. One thing that I would certainly want to say is that the fantastic work done by the health ministry in terms of tackling the pandemic and the response of of all of us, of our nation, of our leadership, of our government in tackling the pandemic. I mean, I think India did an exemplary job in terms of tackling the pandemic, and we had, it was a great example of how visionary leadership can truly transform and the strong impact that it will have to meet any sort of challenges. The discovery of the vaccines, the manner in which it was rolled out, the entire vaccination program, the manner in which it was carried, was a great example of how Indians, when they unite under great leadership and under visionary leadership, great things can truly be achieved. अभी एक स्टूडेंट आप सब लोग डॉक्टर्स हैं, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, लेकिन कोल्ड सफर कर रहा हूँ। ऐसा ही है, बीमारी कभी किसी को पूछ के तो नहीं आती है, डॉक्टर को भी आ जाती है, मिनिस्टर को भी आ जाती है। तो मेरे महाराष्ट्र का प्रवास तय हो रहा था, कई महीनों से पेंडिंग था। DY पाटिल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज मुझे विजिट करनी है। दो विषय मेरे मन में था। माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गुजरात, भावनगर डिस्ट्रिक्ट, इन स्मॉल विलेज। जब मैं छोटा था और उस वक्त किसी को कोई बीमारी होती थी तो बड़े ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती थी, तो हमारे यहाँ लोग बोलते थे कि बड़े डॉक्टर मुंबई में होते हैं और वहाँ पेशेंट को ले जाना होगा। मेरे मन में थोड़ी कुतूहलता भी थी, लेकिन योगानुयोग मैं हेल्थ मिनिस्टर भी बना, कई डॉक्टर से मिलना भी होता है, और आज DY पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जब मैंने विजिट की, मैंने कैथलैब का इनॉग्रेशन किया, न्यू कैथलैब का, और सिमुलेशन लैब देखी, और अभी आपका 5D टेक्नोलॉजी से टीचिंग का सिलेबस देखा। आपको 5G उसमें उपयोगी तो होगी ही होगी। 5G और 5D दोनों मिल जाएंगे। ये सब मैंने देखा तो सचमुच जो 35 इयर्स एगो कहावत थी कि मुंबई में कुछ विशेष होता है, ये मैंने केवल मुंबई में जो है वो देश में कहाँ भी नहीं है, ये व्यवस्था यहाँ देख के मुझे खुशी हुई। दोस्तों, हम इंडिया है और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हम सब लोग अपने घर पे तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से ध्वजवंदन किया और उस वक्त उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने 5 प्रण देश के नागरिकों को लेने के लिए कहा। एक प्रेजेंटेशन लेके आए। सुबह में मैं हर दिन 9:30 सभी साइंटिस्ट के साथ बैठता था और सब लोगों ने मैंने कोई ना कोई काम दे के रखा था। एक साइंटिस्ट ने मेरे सामने प्रेजेंटेशन रखा। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के 200 पेशेंट, कोविड पेशेंट पर एक स्टडी हुई और स्टडी बताती है कि कोविशील्ड वैक्सीन कितनी असरकारक है। तब मैंने उसको कहा था कि भाई ठीक है, अमेरिका में स्टडी हुई, उसका मॉडल आप देखो, नहीं देखना ऐसा नहीं, दुनिया में जहाँ भी जो भी अच्छा हो उसको देखना चाहिए, लेकिन आपके पास कोविन प्लेटफॉर्म है और उस वक्त 60 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो गए थे।
मैंने कहा उसका डेटा हमारे पास है भाई, और उसका एनालिसिस करो, हमारा एम्स का डेटा का एनालिसिस करो और वो स्टडी के रूप में दुनिया के सामने रखो। नेक्स्ट वीक में आप एक प्रेजेंटेशन मेरे सामने लेके आओ। दोस्तों ICMR ने प्रेजेंटेशन तैयार करके मेरे सामने लाए थे, आज दुनिया उसको एक पैरामीटर के रूप में देखती है, इस स्टडी का अध्ययन करती है। नाही, एक चांगली सुविधा आपण इथे उपलब्ध करून दिलेली आहे कार्डियाक कॅथलायझेशन लॅबोरेटरीचं जे पहिलं मशीन आम्ही जे इथे टाकलेलं आहे, आणि आरोग्यमंत्र्यांनी देशाची आरोग्याची दिशाही त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मांडली, आणि त्याच्यात आयुष्यमान भारत स्कीम जी आहे, जे सामान्य लोकांच्यापर्यंत आरोग्यसेवा जी पुरवली जाते त्याबद्दलही त्यांनी त्यांचं मत मांडलेलं आहे. आणि आम्हाला आनंद वाटतो की आणि समाधान एक आहे की आमच्या मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सामान्य लोकांना वेगवेगळे जे शासकीय स्कीम्स आहेत, म्हणजे आयुष्यमान भारत असेल, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना असेल किंवा MPKY असेल, तर या सर्व स्कीम्समधले जे पेशंट्स असतात ते आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही सुविधा पुरवू शकतो, ह्याचं एक समाधान मला मनापासून वाटतं. नाही, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मुळातच आमचं हॉस्पिटल हे स्थापनेपासून 2004 सालापासूनच सामान्य रुग्णांची सेवा हे मोठ्या प्रमाणात पुरवत आहेत. म्हणजे तुम्ही आमच्या बेड्सचा जरी विचार केला तर जवळजवळ 95-99% पेशंट्स हे सामान्य वर्गातूनच येणारे पेशंट्स आहेत. आणि आता अर्थात बऱ्याच पेशंट्सना आता आयुष्यमान भारत असेल, जसं मी आधी सांगितलं, किंवा महात्मा ज्योतिबा फुले योजना असेल, त्या योजनेच्या माध्यमातून त्यांना आमच्या हॉस्पिटलमध्ये एक ट्रीटमेंट करायची एक संधी उपलब्ध आहे, आणि अतिशय उच्च दर्जाची ट्रीटमेंट ह्या सर्व पेशंट्सना इथे उपलब्ध आहेत. आमच्याकडे अतिशय सक्षम डॉक्टरांचा संच इथे आहे, आणि त्याच्यामुळे वाटतं की एक समाधानाची गोष्ट आहे की आम्ही आरोग्य क्षेत्रात हे आमच्या वतीने हे कॉन्ट्रीब्युशन करू शकतो. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.